हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। जून 2025 में कंडक्ट होने वाले महाराष्ट्र सेट एग्जाम के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम पे चले जाइए, गूगल क्रोम पे। लैपटॉप या पीसी या अपने फोन से भी आप जा सकते हैं। आपको टाइप करना है सेट एग्जाम। सेट एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। फर्स्ट लिंक ही आपको दिखेगा। ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप लैंड करेंगे आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट 3 लिंक्स दिखेंगे, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। ओके, इस बार इन्होंने ऑप्शन दिया यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय एप्लीकेशन नंबर, यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय स्टूडेंट नेम एंड यू कैन डाउनलोड वाया लॉगिन। ओके, ये 3 ऑप्शन है। सो हम वन बाय वन देख लेते हैं। डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय स्टूडेंट नेम, अगर आपको अपने नाम के थ्रू एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है सो यू कैन चूज दिस ऑप्शन। सो लेट्स से you don't remember your application number, okay, so आप ये चूज कर सकते हो, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय स्टूडेंट नेम। ओके, क्लिक ऑन दिस। ओके, एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा, उसको स्क्रॉल डाउन करके आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। ओके, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें आपको आपका बर्थ डेट एंटर करना है एंड आपका नाम एंटर करना है। मेक श्योर जैसा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने नाम मेंशन किया था उसी फॉर्मेट में लिखना है। For example, you have to first mention your surname, then your first name, then your middle name. पहले आप अपना surname लिखेंगे, then first name, then middle name. Okay, so I will enter the details. Surname, first name, and then your middle name. Next, you need to select your birth date. Okay, आपको आपका birth date select कर देना है ऊपर से using calendar. Okay, select the year, select the month, and select the specific date. And now click on download admit card. Okay, as soon as you click on download admit card आप देखेंगे आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ओके, यू जस्ट कैन क्लिक ऑन इट एंड व्यू योर एडमिट कार्ड। ओके, लेट्स ट्राई दी अदर ऑप्शन जो होम पेज पे मेंशन्ड है। ये ऑप्शन इसलिए था कि अगर आपको एप्लीकेशन आईडी पता नहीं है। ओके, नाउ इन केस यू नो योर एप्लीकेशन आईडी यू कैन क्लिक ऑन द सेकंड लिंक दैट इज डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय एप्लीकेशन नंबर। ओके, लेट्स क्लिक ऑन दैट। अगेन आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। ओके, यू कैन गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। ओके, एंड स्क्रॉल डाउन and click on I have read all the instruction and proceed. Okay, proceed पे click कीजिए। Okay, once you have click on proceed then you need to enter your application number. Okay, आपको आपका application number enter करना है। So let's say I am entering my application number. Okay, and then again select your birth date. Okay, select your year, month and date and then click on download admit card. Okay, it will take few seconds and your admit card will be downloaded. Okay, so this is the second method that you can use to download your admit card. Let's see the last method. Okay, at the top first link is given download your admit card here. Okay, this is using your login IDs. Okay, email ID और password जो आपने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते टाइम। ओके, सो इस पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, यू नीड टू एंटर योर यूजर नेम। ओके, प्रोबेबली इट विल बी योर email ID. Okay, and then you need to enter your password. Okay, make sure it is done properly. Okay, in case अगर आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड भूल गए हैं at the time of the registration आपको email आया होगा। Okay, you can check your mail and you can enter the credentials properly. Okay, username and password. Now click on login. Okay, again the same instruction page will be there. You just need to scroll down. You can read the instruction, you can scroll down and click on I have read the instruction and click on proceed. Proceed पे click करना है and directly you will see your application number and candidate name and download admit card button. Okay, so you need to click on just download admit card button.
Okay, so your admit card will be downloaded. Okay, so this is how you can download your admit card for Maharashtra SET examination for June 2020. Okay, so all the very best for your examinations for June 2025. Do like and share this video and do subscribe to our channel Instant Seekh. Thank you.